Khushbu ji will start. Lekhan ji. Yeah, sure, sir. Yes, please. Okay. So we at FinTrack Advisors delighted to welcome you to another of our webinar. This time we are covering a very important topic, which is regulations of Singapore. This is going to be a very important webinar by Mr. Dekhak Agarwal. We'll be covering all the regulations and whatever details are required by professionals as well as entrepreneurs to enter the Singapore market. We at FinTrack believe that these webinars from time to time enlighten our participants and also educate them. Even if somebody is missing the webinar, that is not an issue because all the entire event will be uploaded in the YouTube channel of FinTrack Advisors also. With this, I'll ask Khushbu ji to introduce the speaker. Khushbu ji, all yours. Yes, it's 1 second. Good morning, everyone. I'm pleased to introduce my friend, Lekha. His areas of expertise span a wide range of fields such as strategic business development, accounting, banking, finance, auditing, direct and indirect taxation. Lekha is CMA CA. His multifaceted skill that allows him to offer integrated and strategic solutions in both domestic and international context. He is a top outside of his professional and academic achievement, dedicated writer and thought leader. His articles in key national newspaper across India. I think We are happy there's some to disturbance in your yeah, and I Can think you hear even me? your No. pet is also excited to join. Yeah, even your pet is excited to join the He is webinar. I like think. that. I don't know. Yes. So we are Lekha ji, happy with to have this, you, Lekha. Thank you so much, Neeraj sir, FinTech Advisor founder, for inviting me on the webinar. Thank you so much, Khushbu ji, for the wonderful introduction, and thank you so much all the participants for joining us. So today we are here to uh, know what is the benefit of incorporating an organization, setting up of a business, working in the different markets like USA, UK, Australia, Canada, Middle East since last couple of years. I think I can assure you that Singapore and Sri Lanka in the Asian countries are the best instead of people are going for Dubai. So it's let's we start how I am proving that my statement for the benefit of all the participants. So let me share my presentation here, and is the presentation visible here? yes, sir, you are visible. The PPT is also visible. It's so how some, uh, how someone take a strategic entry into Singapore. Let me share my views on the and what are the regulatory essentials for the business owners. Like जैसे आपको सबको पता है कि every market has the benefit of private limited, public limited, LLC partnership firms, proprietorship firms. Just like Singapore is also the one of them. But in Singapore, there are lots of things which make Singapore different from all the other countries. Just ये अभी एज पर ग्लोबल रैंकिंग सबकी बेस्ट चॉइस एंड ग्लोबल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 3rd पे आता है. सदर्न एशियन मार्केट में तो सबसे टॉप चॉइस है फॉर. एंड what is the key benefits, because as far as what are the industries over Singapore, just like for सबसे पहला financial and accounting hub है सिंगापुर. उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में बहुत आगे है सिंगापुर. उसके अलावा लॉजिस्टिक्स एंड टूरिज्म, ये सिंगापुर की मेन इंडस्ट्रीज है जिसमें की एरिया जो उसकी सिंगापुर की जीडीपी को एंड सिंगापुर की इकोनॉमी को रोबस्टनेस प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इनोवेशंस, बिकॉज टेक
बहुत हाई लेवल पर है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, आज हम सब बहुत सारी चीजें इस सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले जब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम देखना चाहेंगे कि इंडिया और सिंगापुर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस तरह से है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज जो है हम दोनों कंट्रीज के बीच में ऑलमोस्ट सिमिलर है। कल्चर्स बेनिफिट्स काफी सारे होते हैं, एंड एज आप सभी को पता है कि इंडिया में अगर आप किसी भी स्टेट बाय स्टेट भी जाते हैं तो कल्चर डिफर करता है, बट सेम लाइक कि सिंगापुर इज ऑल्सो नोन एज ए मिनी इंडिया. There are lots of Indians residing there and doing their business, and they're doing their jobs and all the things. So इंडिया एंड सिंगापुर के साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको सेका बोलते हैं वो भी हो रही है 2015 में अर्ली, जिससे ट्रेड, डिफेंस, फिनटेक एंड स्टार्टअप्स को बूस्टअप देने के लिए ये एक पार्टनरशिप हुई है. उसके अलावा एसएन जो इसका एसएन जो नेशंस होते हैं उनके अंदर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं. और सेका, जैसा भी मैंने बताया, ये सेका 2005 में साइन हुआ था, बायलैटरल एग्रीमेंट एंड रिड्यूस द टैरिफ बैरियर्स एंड एनहांस इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शंस. सो इन सारी चीजों के लिए से इंडिया एंड सिंगापुर we can say that there is a strong foundation in both the countries. Singapore is just not a destination, it's a launchpad for Indian entrepreneurs to go global. आज आपको पता होगा कि आपको पता है या नहीं, इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो कि सिंगापुर में जाके उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई है, वहां से फंड रेजिंग की है एंड बिजनेस डेवलपमेंट वहां से स्टार्ट किया है, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स. व्हाई इंडियन प्रीफर सिंगापुर? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई इंडियन प्रीफर सिंगापुर? बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबली रैंक थर्ड है, वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग में रिसेंटली रैंक थर्ड है इसका. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर एफिशिएंट रेगुलेटरी सिस्टम, एसीआरए एंड आईआरएस जो वहाँ की गवर्निंग बॉडीज है, तो वो दोनों बॉडीज बहुत अच्छी तरह से एंड बहुत फास्ट एंड इनोवेटिव आइडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उन लोगों ने अपना सिस्टम इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि आपको बिजनेस सेटअप करने में बहुत ईजी है. एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम एमसीए एंड V3 V2 इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, उससे बहुत लाख बेटर चीज है कि वहां पर स्टेबिलिटी है. डिजिटलाइजेशन जो उन्होंने कर रखा है उसमें स्टेबिलिटी है, बार बार चेंजेस नहीं करते और चेंजेस भी होते हैं, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू गुड. फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स. तो सबसे मेजर टैक्स बेनिफिट है, आगे डिटेल में भी बताऊंगा, बट यहाँ पर है 17% फ्लैट रेट ऑन कॉर्पोरेट टैक्सेशन. देन उसके अलावा सबसे मेजर बेनिफिट डिविडेंड और कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, और इंडिया और सिंगापुर का DDAA है, जिससे कि हम डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट के अंदर अपने इंडिया में भी बेनिफिट ले सकते हैं. देन this is the strategic location for as a hub of Southeast Asia, access to Asian, China, Australia, बहुत nearby connectivity है, तो that is why this is known as the strategic location as well. उसके अलावा IP एंड लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सिंगापुर एज सच, मतलब जितना हम लोग अभी तक बाहर काम किया है, सिंगापुर से बेस्ट एज सच अभी तक कुछ भी नहीं लगा. जो IP एंड लीगल प्रोटेक्शंस में जो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और ब्रांड एंड सिक्योरिटीज में, बिकॉज गवर्नमेंट स्टेबल है एंड उसके अलावा लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड करप्शन नहीं है, तो वहां पर एंड सबसे बड़ी चीज उसके अलावा ऑनेस्टी है लोगों. तो ब्रांड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन को सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है. देन बिजनेस फ्रेंडली कल्चर है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग इकोसिस्टम है ग्लोबल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में वही सेम है. एंड उसके अलावा फाइनेंशियल हब है, क्योंकि बिकॉज सदर्न एशिया का सबसे बड़ा एक सेक्टर होने के बाद, बिकॉज ऑफ देयर बैंकिंग, देयर ग्लोबल मार्केट एक्सेस, दिस इज नोन एज द फाइनेंशियल हब. सो दैट इज व्हाई इंडियंस आर प्रेफर सिंगापुर. Then, what are the strategic advantages of Singapore? Why Singapore? क्यों हम सिंगापुर में बिजनेस सेटअप करें? Because political stability and transparent government. आपको पता है या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. 1959 से, if I can remember the year properly, 1959 से लेकर आज तक सिंगापुर में केवल 4 प्राइम मिनिस्टर हुए. सबसे फर्स्ट 31st ईयर उन्होंने उनका टेन्योर था, एंड अभी जो लॉरेंस वोंग है, दिस इज द रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, तो उनका टेन्योर ऑलमोस्ट अर्ली 2023 मई 2023 में उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है. तो
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस कंट्री में होती है, कोई 30 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, एंड अगर 20 साल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहा, तो स्टेबिलिटी वैसे भी नेशन को मिलती है। तो वहां पर सिंगापुर में आज तक 1959 से लेकर अभी तक 4 ही प्रेसिडेंट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस बहुत उसको उसको रोबस्टनेस बहुत ज्यादा मिली हुई है। क्यों? क्योंकि उससे उसी का रिजल्ट है कि दे आर प्रो बिजनेस गवर्नमेंट, कि आज बिजनेस को जितना भी रोबस्टनेस प्रोवाइड करना है, दे आर प्रो इन दैट। पॉलिसीज जितनी भी होती है सारी कंसिस्टेंस मैनर पे चलती है, और कॉन्फिडेंस को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। बिजनेस की जितनी भी प्लानिंग हो रही है सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। और उसके अलावा टॉप जैसा बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग इसका अभी 3rd है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आज हमारे इंडिया में हम नेम रिजर्वेशन कराते हैं, उसके अलावा फिर बाद में दूसरे फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज सबमिट करते हैं, नेम रिजर्वेशन में ही 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जबकि सिंगापुर में कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है 100% ऑटोमेटिक, डिजिटलाइज, एंड 1 से 5 दिन तक हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो जाता है। देन उसके अलावा फॉरेन ओनरशिप 100% मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में अलाउ है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसा अभी बताया कि, और एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, एंड उसके कारण एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ एशिया में। देन टैक्स बेनिफिट, कोई भी बिजनेस क्यों सेटअप करा जाता है? बिकॉज ऑफ टेकिंग द टैक्स बेनिफिट्स। अभी कल का ही एक न्यूज था कि स्टार्टअप्स को इंडियन गवर्नमेंट कुछ टॉप 3 इयर्स में आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है। दैट इज ऑलरेडी कवर्ड बाय सिंगापुर इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अभी आगे 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 मैं आपको टैक्स बेनिफिट, स्टार्टअप्स बेनिफिट्स बताऊंगा कि सिंगापुर में क्या क्या स्टार्टअप्स बेनिफिट्स हैं एंड क्या क्या टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ऑलरेडी उन चीजों को प्रमोट ऑलरेडी काफी टाइम से कर रही है। वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी नाउ आफ्टर लॉट्स ऑफ ईयर्स, जबकि सारा बिजनेस ऑलमोस्ट आज इंडिया का सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जिनका स्टार्टअप्स था, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो भी थे, वो सारे सिंगापुर चले गए। तो एज कॉर्पोरेट टैक्स अब, और कॉर्पोरेट टैक्स में भी कैप है 17%, जीएसटी 9% फ्लैट, कोई सा भी आइटम ले लो, मैक्सिमम आइटम्स, थ्रेशोल्ड ऑडिट की टैक्स कंप्लायंसेस, एम्प्लॉय लीगल कंप्लायंसेस बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में है एंड बहुत लिमिटेड मैनर में है। तो एंड DTAA मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अवेलेबल है इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। तो उसके कारण से लीगल अवॉइड ड्यूल टैक्सेशन में हमें हेल्प मिलती है, वो अवॉइड करता है, ड्यूल टैक्सेशन होने से बचाता है। देन व्हाट आर द मोर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इन टू सिंगापुर? कि सबसे पहला, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन है, कि जो इनका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, ट्रिप्स कंप्लेंट पोर्टल है, अगर आपका कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे ब्रांड को कॉपी कर रहा है या मेरे आईपीआर किसी को भी कॉपी कर रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए सबसे टॉप लेवल का जो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना हुआ है, उसमें से ट्रिप्स सबसे हाईएस्ट रैंकिंग दी गई है इसको, ट्रिप्स पोर्टल को, जो कि इंडियन स्टार्टअप्स, टैक्स, फार्मा, बायोटेक एंड डिजाइन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मेजर बेनिफिट जनरेट करता है। देन उसके अलावा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, उस चीज के लिए बोलने की बात नहीं है, आप सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट वहाँ की प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर किस तरह से वहाँ का हब बना हुआ है साउथ एशिया का। तो we can say that is the also reason ki if infrastructure is good, then someone is just going to take a benefit of that in the particular country. Just like Indian startups, जैसा मैंने आपको बताया था कि ओयो एंड फ्लिपकार्ट, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके खुद के ऑफिसेज वहां पर सेटअप हुए हुए हैं। देन उसके अलावा हाई क्वालिटी वर्कफोर्स, आज स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, या अपन कहेंगे अनस्किल्ड लेबर, तो वहां पर सबसे हाई स्किल्ड लेबर जो कि टेक फैमिलियर है, आज वहाँ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ईच एंड एवरीबडी इज फैमिलियर विद द टेक एंड स्किल्ड है, स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है एज, एंड दे because of large number of professionals are also there, just like Indian professionals are also there. So lots of high quality workforce are available to ensure your vision and ensure your to take you start in your global footprint in the Singapore.
देन स्टार्टअप इको सपोर्ट सिस्टम, स्टार्टअप्स को क्या क्या बेनिफिट्स है, बहुत सारे इंसेंटिव्स पॉलिसीज है, टैक्स बेनिफिट्स है, ऑडिट की कंप्लायंसेस नहीं है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए काफी सारे रिबेट्स हैं। तो वो सारे सेटअप करते हुए स्टार्टअप्स एंड अदर इंडस्ट्रीज को सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो कि अपने आप में सिंगापुर को डिफरेंट बनाता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। देन what are the business structure for Indian investor or anybody, कि just like इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड का कंसेप्ट है, तो सेम वहां पर भी प्राइवेट लिमिटेड का कंसेप्ट है। एलएलपी वहां पर भी अवेलेबल है, ब्रांच ऑफिस वहां पर भी अवेलेबल है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वहां पर भी अवेलेबल है, सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करना वहां पर भी पॉसिबल है। तो दिस इज द ओवरऑल जर्नल बिजनेस कि ये सिंगापुर में क्या क्या बिजनेस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। आज हमारे यहाँ पे पीवीटी एलटीडी अपन प्राइवेट लिमिटेड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको अपन पीवीटी एलटीडी बोलते हैं, वहाँ पे पीटी एलटीडी है। और इसमें 100% ओनरशिप, जैसा मैंने बताया था, मिनिमम $1 की अपना कैपिटल चाहिए, शेयर कैपिटल जो होती है मिनिमम एक सिंगापुर डॉलर से स्टार्ट हो जाती है। एंड टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स टैक्सेस फ्लैट 17%। So Lekha ji, can we pause for 1 second and see if anybody has any question? Yeah, sure, sir. Anybody has any question, they can unmute or they can write in the chat or they can raise your hand and we can unmute them. Till the part we have already covered. One thing, Lekha ji, I wanted to understand was what is the overall approximate cost of joining, incorporating an entity in Singapore? Sir, approximately. it depend on the industry, sir. Basically, it's depend on the industry because वहाँ पर हमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना हर कंपनी में मैंडेटरी है। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे पेड अप कैपिटल 10 करोड़ प्लस रिक्वायरमेंट होती है कि सीएस का अपॉइंटमेंट करना वहाँ पर इस तरह से। बट यहाँ पर सिंगापुर में हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होना मैंडेटरी है। तो वहाँ पर और ऐसा वो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि एक कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी में अपॉइंट हो गया तो वो दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। सेम डायरेक्टर की नॉमिनी डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर्स की वहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स बिकॉज एंड उसके अलावा अगर आप वर्चुअल ऑफिस सेटअप करते हैं तो वर्चुअल ऑफिस सेटअप की अलग कॉस्ट आती है। एंड अगर आप अपना फिजिकल ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं तो फिजिकल ऑफिस सेटअप की अलग कॉस्ट आती है। तो ऑलमोस्ट अगर हम सारी कॉस्ट अगर करें तो 4 से 5 हजार $US में आप कंप्लीटली अपना सिंगापुर में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं अगर कॉस्ट की बात करें तो, जिसमें आपका 1 ईयर का कंप्लायंसेस पार्ट भी पूरा इंक्लूड रहता है एक्सेप्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। वो वाला पार्ट वो पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, बाकी एनुअल कंप्लायंसेस जो भी होती है वो सारी वहां पर इंक्लूड रहती है। ओके, एंड सर फॉलोइंग अप विद माय क्वेश्चन, जी जो सर। अपने कंपनी सेक्रेटरी बोल रहे हैं वो whether there is any option for the Indian company secretaries to become Singapore CS, like उनको कुछ additional exam देना होगा, if you have any knowledge of this, तो उन्हें कुछ एग्जाम देना होगा या Indian CS are allowed to become members there? And sir, as per my knowledge, Indian Institute of Company Secretaries of India and the Singapore Company Secretary Institute has signed the MOU couple of years back in the tenure of, as I remember, in the Ashish Garg's tenure. But after that, what happened with that, I am not aware for that. So there are limited opportunities are still there, but we have to qualify the Singapore Company Secretaries exam, which is organized by the SIC, something like the platform is there. Okay. Okay, sir. Anybody else, any question, they can raise your hand, write in chat, unmute themselves. I think, Lekha ji, we can proceed. Okay, sir. Thank you. तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप,
अब जस्ट लाइक इंडिया में एलएलपी का कंसेप्ट आया 2008 में, बट सिंगापुर में ये कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा है। एलएलपी जो कि प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट है आज की तारीख में, तो प्रोफेशनल्स और जॉइंट वेंचर्स के लिए कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद द पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी। एंड जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो प्रॉफिट जो भी होते हैं प्रॉफिट टैक्स है पार्टनर लेवल इंडिविजुअली। जस्ट लाइक यूएसए में भी जो सिस्टम है फेडरल एंड स्टेट का, तो अगर आप सी कॉप इनकॉर्पोरेट करते हैं या एस कॉप करते हैं तो दोनों में जो डिफरेंसेस है वही सी कॉप अगर है तो आपका पास थ्रू इनकम के थ्रू कंपनी में ही होगा, और एस कॉप में आपका अपने पार्टनर या डायरेक्ट शेयर होल्डर्स के हाथ में इनकम टैक्सेबल होती है। सेम बेसिस पे या सिंगापुर में भी यही बिजनेस टैक्सेबल इस तरह से टैक्सेबल होता है। देन उसके अलावा जैसे अपन इंडिया में लाइसेंस ऑफिस खोल सकते हैं, जैसे वहां पर सिंगापुर में अपॉर्चुनिटीज है ब्रांच ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की, जिसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर अपन खोलते हैं तो मैक्सिमम ये 3 इयर्स के लिए वन टाइम वैलिड होता है। एंड ये केवल मार्केट रिसर्च और फेजिबिलिटी स्टडी के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। उनको कोई भी इनकम जनरेट करने के लिए वहां पर कुछ भी अलाउ नहीं होता है। एंड इसका 3 साल का वैलिडिटी होता है। ये किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते और इनवॉइस रेज नहीं कर सकते। देन सब्सिडरी कंपनी, जस्ट लाइक कि हम इंडिया में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, वहां पर भी सब्सिडरी कंपनी का एक ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, एंड जो कि सिंगापुर के टैक्स इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल होती है। तो दिस इज ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल फॉर इंडियन एंड एनी काइंड ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर in the market of Singapore. Then what are the regulatory requirements for Indian business owners? कि आज हमें किसी भी कंट्री में अगर बिजनेस करना है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडीज है ACRA, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ACRA क्या करती है, इसका क्या रोल है कि वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड कंपनी कंप्लायंसेस के लिए मेजर है। जैसे अपने यहाँ पे जस्ट लाइक इन इंडिया MCA इज देयर इन सिंगापुर देयर इज ACRA। देन आईरास को अपन ये सारा इंटरनल रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर विच इज हैंडल द टैक्स एंड टैक्स रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस मैटर्स। जस्ट कि अपना सिंगापुर में अपना जस्ट लाइक इन इंडिया CBDT एंड डायरेक्ट टैक्सेशन बोर्ड एंड CBEC आर देयर। So there is IRS helping in the tax registration and compliance part. Then there is MOM. This is Ministry of Manpower, which works and issues the visas and labor laws. And then Ministry of MAS, which is the financial sector. I just forgot that name. That a ministry affiliated in the revenue recognition and all the things, which is regulated the financial sector licensing and regulations. So there are 4 key regulatory bodies out there. Then apart from that, what are the additional requirement for setting up of a business? That there are the physical, they just need the physical address, local physical address, appointment of company secretary within the 6 months of incorporation of a company. You must appoint a company secretary. Then annual compliances and statutory filings and industry specific license wherever applicable. If you are going for a particular industry, then you have to apply for an industry specific license only. Then what is the GST registration? एज इंडिया में अभी इंडिया में 40 lakhs का टैक्स लिमिट है, तो वहां पर मैंडेटरी सिंगापुर डॉलर में 1 million का लिमिट है। अगर $1 million सिंगापुर डॉलर अगर आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट क्रॉस हो जाता है तो यू हैव टू रजिस्टर फॉर द GST registration. Then already communicated that company reservation, name reservation. This is and along with the business registration with ACRA will take almost 1 week time to incorporate all your business setup, and minimum share capital is required for $1. Singapore $1 as 1 SGD. Then resident director requirement, at least there should be one director, resident director, which is permanently required for the setting up of a business in the Singapore. So these are all the regulatory requirements for Indian business owners or any business owners for setting up of a business in Singapore. Then what is the role and what is the next step for Indian entrepreneurs?
because entrepreneurship as in India में भी startups and all the things को बहुत ज्यादा promotion मिल रहा है, तो same line item पे इन सिंगापुर में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बट बिफोर एंटरिंग इनटू द सिंगापुर मार्केट वी हैव टू डू अ रिसर्च एंड प्लानिंग that where we have to set up our business, what are the market before entering into the any kind of business. We just have to go for a market research, identify the target customer, because and target the industries. Just like there are lots of industries in manufacturing industries, biotechnical engineering, fintech agencies, financial, tourism. So what and what is the what are the market core identical market for you available in the different journals, then compare that those markets with the Singapore, then then planning for the setup of an organization and entity into the Singapore. Then entity selection, as per as I already explained that there are lots of business structure available, just like private limited, LLP, partnerships and all the things. So according to your long term goals and budgets and plans, we can set up an entity selection. Then after selection of entity which we have to incorporate, then we can go for a registration with the ACRA and beach filing portal. Then after incorporating of company, we have to appoint a company secretary, set up our accounting system, and we have to ensure all the regulatory requirements. We have obtained the different licenses which are required to meant for the to start the operations of a business. Then after we can start the our operation launch in the market of the Singapore. Then opening of bank accounts already permitted activity hai. Just like there are lots of bank and there are local banks as well, there are MNCs banks as well, and there are virtual banks also available there. So I have listed it down in our next slide. So I will let you know what are the banks options available in the business for starting your business operations in Singapore. Then let's move to next our slide. How Singapore business guide for Indian entrepreneurs. So what are the work passes and immigrations essentials? Because if somebody have to move Singapore and go for a job and all the things, some the Ministry of we have to register with the Ministry of Manpowers. Foreign business owners and professionals who plan to live or work in Singapore must obtain the appropriate work passes issued by the Ministry of Manpower. So what are the essentials of that? First, this is employment based employee pass, which is known as EP. This is the most common for foreign professionals and business owners, which who has the minimum fixed monthly gross salaries SGD 5,000 or more. Apart from that, they need the requirement a recognized degree and relevant experience, must be employed by the Singapore-based company, and this is valid for 1 to 2 years. And subject to renewal, there are easy renewal available for that as well. Then Enterpass, which is designed for the only for the startups and founders who are into the qualified innovative sectors, and then they just need the comprehensive business plan of theirs, and there is no minimum salary requirement for obtaining the Enterpass, and there is no need for existing company at the time of application. So if somebody has the benefit has the his own startups, or he is an entrepreneur and then wish to go for taking the entry into the Singapore market, then go with the entry pass. Then there is another pass type, PEP, personalized employment pass, for higher earning professional, not tied to one employer. Just like we are the higher we have the different clients, if we wish to set up our professional office there, we have to obtain that PEP. But there is a salary threshold that should not exceed 22,500 Singapore dollar per month. This is also valid for 3 years and non-renewable. So once we have gone for the PEP, this is the 1 year. Then we have to apply the new PEP again, because in this there are frequently changes in the rules and regulation regarding the PEP. Then there are
family and dependent pass, because if we are going to settle our business into the Singapore, we must know how we can proceed for our dependents and our family passes over there. So there is the one passes, this is known as dependent pass, which is married spouse and children of EP and entry pass holders. Then this allows the dependent to live in the Singapore and can work on the letter of consent or by obtaining a work pass. So dependent pass is based on the work pass as well. Then there is one pass, overseas network and expertise pass, which is launched to attract the top global talent. This is including the startups and entrepreneurs for the annual salary of Singapore dollar 30,000 plus. And if they have achieved the exceptional achievement in the area of arts, science, sports, and different business activities, then they can go for a one pass as well. Then there is another pass which is known as the long-term visit pass for common law partners, stepchildren, or parents. There, if they wish to stay for a particular long period of in the Singapore, they can apply for that, and which is ideal for for the any business entrepreneur who is relocated who wish to relocate in Singapore with their families during the business expansion. And what are the different documentation required for obtaining these passes? Their passport size copy, passport size photo, and if there is where there are requirement of the existence of the company in the Singapore, they have to file the company ACRA pitch profile and educational certificates. So this is all about the passes and all the visas, what are the available for the Indians and global entrepreneurs and startups business. Then what are the application process and what are the timelines? So company registration, it's 1 to 5 days via ACRA portal. Then who can apply? Being a professional, we can apply it at there. If we go for a EP work pass application, it will take around 3 to 8 weeks, and either through employer or either through an agent, we have to apply for that. Then what is IPA? In principle approval, we have to require for that. If for a particular different kind of sectors only, and who will issue? The Ministry of Manpower will issue the in principle approval and pass issuance. Then let's understand how taxation framework in the Singapore. As earlier to before we start with the taxation, can we hold for 1 second and see if anybody has any query? Sure, sir. Anybody have any query? Anything they want to ask till that till the PPT, the slides which have been covered? Yeah, this is Rakesh. Lekharji, one thing I want to know, what kind of social securities are there? Means in India, like PF is there. So what kind of rules and regulations of such kind of social securities in Singapore? Sorry, sir. Can you please repeat your question again? Your Yeah, voice actually, is, Neeraj ji. in India, like there are a lot of social security schemes are there, which are compulsory as prescribed by government, like PF, Provident Fund, like social security. So what kind of social security norms are applicable in Singapore? Is there any kind of minimum norms are Yeah, there? sir. Yes, sir. Same on the line of the Indian PF facilities, social securities. There is a central PF fund which is known as CPF. I think so. I have mentioned in my PPT in the upcoming slides. So we have to go for that, and there is a minimum contribution which is mentioned as per the cap in from the employer side and employee side as well. I have covered in the later in the slides. Okay. Thank you. Lekharji, Mr. Vishwas has one question. Could you also cover the latest issues relating to data protection? We heard every company has to file a declaration regarding data protection. I don't think so, sir. There is because they, as I already told, that there are strict laws and strict rules and regulation for protection of the data, and all the things has been digitalized. So I don't think so. There is any latest issues relating to data protection. I never heard,
but as a foundation, as far as the concern of the declaration, we didn't file for any kind of or organizations or client companies, sir, as of now. Okay, thank you, sir. I think Vishwaji, this covers your point, right? If you have any other query, you can write in the chat box or unmute yourself. Hello. Yes, Yeah. Vishwa. Yeah. See, we have a subsidiary, so I spoke to one of the consultants. We were asked to appoint a DPO, that is a personal data protection officer or something. So every company should appoint a DPO, is what we were told. Okay. Are you aware of that? DPO, No, sir. data I have protection to check officer. with. No, sir. I Okay. am not aware for that. I have to check Okay. with that, sir. Okay, because this was done in 2024, if I'm right. They said then they gave a 6-month extension. I guess in 2025 you can. Sir, earlier appoint. there were that was, but I don't think so. Currently, it is ongoing. Okay. Yeah, earlier that was there. I can still remember that we have filed for with the BIS portal only DPO appointment, but I don't think so. There is a current regulations in that. Sure. Okay. Okay, Shall let we us proceed with move this? to- Yes, sir, we can proceed. Okay, sir. Thank you. So we are working as we are going to start our taxation framework in the Singapore. As I have already told that the corporate flat tax rate is the 17% versus the 22 to 30% in India. So this is the flat rate chargeable in the Singapore for the corporates, which is the major benefit for the business setups, business owners and entrepreneurs and startups. And there is no dividend tax, just like in India. Dividends tax now is taxable in the hands of shareholders. And flat rate of GST, there is the single rate of GST in the Singapore instead of the multiple rates in the Indian system. And personal income tax is 0 to 24% rates varies as per the different returns. And apart from that, what are the taxation authority? What are the taxes? Which is the tax authority? I already suggest that Inland Revenue Authority of the Singapore, IRAS. We have no, which is popularly working for all the taxation matters, who's taking care of all the taxation matters in the Singapore. Then Singapore is the filing system is self-assessment based, and there are lots of limitations in the audits as well, relaxation in the audits as well. So there is we can file our on the basis of the self-assessment, just like we do in India as well. And as we have the DTAA, we can take the benefit of the DTAA as well from the India, if we are going to set up a subsidiary and having the holding and subsidiary relationship in Singapore. Then द मेजर पार्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कल जो एक लेटेस्ट न्यूज आया था कि स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट एक बेनिफिट देने वाला है, वो ऑलरेडी सिंगापुर में काफी टाइम से चल रहा है, जिसमें फर्स्ट 3 years ऑफ असेसमेंट में स्टार्टअप्स को एग्जेम्पशन है। आइदर 75% ऑफ एग्जेम्पशन इनकम पे फर्स्ट 1 लाख जो सिंगापुर डॉलर है उसका 75% एग्जेम्पशन है, नेक्स्ट 50% है नेक्स्ट $1 lakh के लिए, 1 lakh सिंगापुर डॉलर के लिए। एंड उसके अलावा इफ वी गो फॉर द पार्शियल टैक्स एग्जेम्पशन, फर्स्ट 10,000 सिंगापुर डॉलर पर 75% टैक्स एग्जेम्पशन है, एंड देन नेक्स्ट 1,90,000 पर 50% टैक्स एग्जेम्पशन है। एंड इफेक्टिव टैक्स रेट 4.25 से 8.5% है ऑन फर्स्ट SGD 2 lakh तक। So this is there are different tax exemptions brackets, and इंडिया सिंगापुर का जो DTAA है वो डिविडेंड, रॉयल्टीज, टेक्निकल फीस, नो हाउ, पेटेंट्स, IPR सबको कवर करता है। सो दीज आर ऑल द सब्जेक्ट GAR एंड LOB क्लॉजेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू फॉलो द इंडिया सिंगापुर DTAA एज वेल। देन इसके अलावा कुछ टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स भी है सिंगापुर गवर्नमेंट की, जिसमें पायनियर सर्टिफिकेशन इंसेंटिव्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन एरियाज में कंपनीज को प्रोवाइड किए जाते हैं। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इंसेंटिव DEI है, DTDI है, PSG है।
R&D टैक्स डिडक्शन क्लॉजेस हैं। अभी जैसे आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा, तो बिग ब्यूटीफुल बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल लॉन्च बाय यूएसए गवर्नमेंट एज वेल रिसेंटली। सो उसमें भी इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फॉलो किया गया है। जो हम लोग इंडिया टैक्स यूएस की टैक्स प्रैक्टिस करते थे या यूएस में टैक्स रिटर्न जो फाइल करते थे, उसमें मतलब इंडिया इंडिया को कहीं भी कॉपी नहीं किया हुआ था। बट आज जैसे इंडिया में व्हीकल परचेज करने पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन वन बिग ब्यूटीफुल बिल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हायर एजुकेशन के लिए वहां पे पहले डिडक्शंस नहीं मिलता था, इंटरेस्ट अगर आप कुछ पे कर रहे हो, तो उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। तो बहुत सारे 80 चैप्टर जो अपना 6 है, 80C से 80U इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो उन सारे चैप्टर्स को भी अभी अब ग्लोबल लेवल पे लोग कवर करने लगे हैं। तो these kind of benefits are also available in that part as in Singapore as well. Then what are the banking, financial and repatriation of profits from Singapore to India? As we have the corporate banking options, just like I already suggested, that there are DSB, OCSB, local banks, and international market के जो banks है, HSBC, Standard Chartered, and Citi. And there is also concept of digital banking. So Aspire, Wise, and Revolt are the digital banks in the Singapore market. वहाँ पर apart from that, there are lots of platforms just like Payoneer, PayPal. So they are also allows the multi-currency accounts with the real-time transaction access. So these are the banking operations being options available for all the entities who has set up their business into the Singapore. Then apart from financing options, working capital loan easily available at trade finance, factoring, startup grants, equity fundings, private equity, IPO pathways, listing Singapore का already listed है बहुत सारी companies, तो easily funding and all the things are easily available. Then dividend to Indian shareholders 0% withholding tax के साथ आता है. Management fees, royalties, DT सब each and everything is covered under the DTEE. So repatriation is also easy. Then इंडिया सिंगापुर रिपेटिशन कंसिडरेशन में क्या है, डिविडेंड में सिंगापुर में 0% टैक्स है एंड इंडिया में टैक्सेबल एज पर एज अदर इनकम अंडर एज पर द DTEE. रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस उसमें 10% सिंगापुर में विथ होल्डिंग टैक्स है एंड अलाउ विद द फॉरेन टैक्स क्रेडिट. इंडिया में जो भी इंडिया में DTEE के अंदर इंडियन टैक्सेशन में कैसे कंसिडर होगा एज पर द DTEE प्रोविजन. सेम इंटरेस्ट इनकम उसमें 50% विथ होल्डिंग टैक्स है एंड इसका इंडिया DTEE में टैक्सेबल भी है अदर सोर्सेज के इनकम में एंड उसका क्रेडिट भी मिल जाता है. कैपिटल गेन ऑन शेयर्स सिंगापुर में 0 रेट है बट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स केसेस. तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टैक्सेबिलिटी. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशंस. जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रांड इमेज एंड ऑल द प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस को रॉबस्टनेस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, as Singapore is known as the global hub for the top IP in the Asia, offering the robust legal framework, efficient registration process, and a strong enforcement mechanism. So we can say that we can go for the trademarks, patents, copyrights, registered designs, and which is the different tenures and which is the registration time क्या different है, उसका period क्या रहता है. Just like if we go for the registration of a trademark, there is a 6 to 9 months registration time and 340 अराउंड पर क्लास जो भी रजिस्ट्रेशन है उसका गवर्नमेंट फीस लगता है. प्रोफेशनल फीस इज डिफरेंटली चार्ज एंड दिस इज वैलिड फॉर 10 years सब्जेक्ट टू रिन्यूअल एज वेल. देन पेटेंट्स एंड IPR. आजकल ग्लोबल लेवल पे PCT एग्रीमेंट कराओ, PCT में कहीं भी आप फाइल करेंगे तो यू हैव टू फाइल द यू विल गेट द 150 nations patent in a single patent application. But before that you have to go for the localized country where you have to file the in their your home country as well. Just like अभी हमें इंडिया में भी कोई पेटेंट कराना है उसको ग्लोबल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज कराना है तो
हम लोगों को पहले इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा, इंडिया में पेटेंट मिलने के साथ में ही फिर हम पीसीटी की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जो कि 157 कंट्रीज के 157 कंट्रीज में एप्लीकेबल होता है। तो सेम लाइन आइटम्स पे पेटेंट्स को हम सिंगापुर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट 24 to 30 मंथ्स का जो पीरियड होता है वही एग्जामिनेशन का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया में भी सेम पीरियड है। एंड देन फिर वी कैन गो फॉर अ पीसीटी एप्लीकेशन। देन रजिस्टर्ड डिजाइंस की डिजाइन्स वगैरह है तो डिजाइन 6 मंथ्स का रजिस्ट्रेशन टाइम लगता है अगर इसको आपको एज पर आईपीआर अपने को प्रोटेक्शन लेना है तो। एंड 5 इयर्स तक वैलिड रहता है वो डिजाइन पर्टिकुलरली, एंड रिन्यूअल अप टू 15 इयर्स तक रहता है। और विजुअल फीचर्स का प्रोटेक्शन डेफिनेटली देयर इज अ visual features protection is also available there. Then copyright, just like कि म्यूजिक, लिटरेसी, बुक्स, सॉफ्टवेयर वर्क्स, वहां पर जहाँ पर कॉपीराइट है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता है, नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिखा है, और लाइफ ऑफ ए ऑथर प्लस 70 ईयर्स तक ऑलरेडी कॉपीराइट्स अवेलेबल है। देन जैसा मैंने आपको बताया था कि पीसीटी एप्लीकेशन वाया सिंगापुर टू एक्सेस 150 कंट्रीज, वो सब जगह पीसीटी का एक कॉमन प्लेटफॉर्म अभी डेवलप हुआ है। तो इफ वी गो फॉर अ पीसीटी एग्रीमेंट देन वी कैन रजिस्टर फॉर विद आवर होम कंट्री, देन वी कैन फाइल विद द अदर कंट्रीज, सो दैट 150 प्लस कंट्रीज में पीसीटी का एप्लीकेशन हो जाता है। देन की टेकअवेज फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या है कि वर्ल्ड पास स्ट्रेटेजी, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि टैक्स पॉलिसीज बहुत अट्रैक्टिव है सारी है, स्टार्टअप्स को जो टैक्स बेनिफिट्स दिए हुए हैं, बैंकिंग एंड रिपैट्रिएशन बहुत इजी है, आईपी प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल पे मेंटेन किया गया है। तो दीज आर द आईपी प्रोटेक्शन, ऑल द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। And apart from that, India, if we talk about the Indian Singapore rules and regulation, we have to file the GAR, POEM rules, FEMA regulatory requirements, and all the things. So now let's move towards the second part of Singapore entry. What are the employment laws in the Singapore? As Rakesh sir told, while asked that what are the benefits and what are the social benefits available in the Singapore market, let me talk about those in the slides. So जैसा कि पहले बताया था कि एस पास एंड वर्क परमिट जो भी इंडस्ट्री विजिट के लिए एप्लीकेबल होता है, दीज आर द कोटा सिस्टम एंड की एम्प्लॉयमेंट लॉस। कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आर 44 hours in a week, just like not like in India 70-80 hours in a week. Paid annual leave 7 to 14 days का लीव अवेलेबल है। पब्लिक हॉलीडेज 11 जो अभी तक की सिंगापुर गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, एंड सिक लीव 14 अलाउ है, एंड 60 प्लस हॉस्पिटलाइजेशन डेज ऑलरेडी अलाउ है। मैटरनिटी लीव 16 weeks एंड पैटर्निटी लीव 2 weeks अलाउ है। So these are the key employment laws which govern the Singapore. And apart from that, there are employment hiring and payroll compliances as well. We have to go for an employment contract, just like हमारे इंडिया में भी हम लोग राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो डिफाइन करता है सैलरी, वर्किंग आवर, नोटिस पीरियड, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। देन जैसा कि अभी सर ने पूछा था कि सीपीएफ, जैसे इंडिया में पीएफ होता है तो वहां पर सीपीएफ है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। तो ये सिंगापुर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कैप है 11.5 सिंगापुर डॉलर का मैक्सिमम कैप है पर मंथ का। तो दैट इज द फॉर द मैंडेटरी, और ये ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को करना मैंडेटरी है, आइदर ही इज द सिंगापुर सिटीजन और फॉर पीआरस। बट ई पास और एस पास जिनके पास है उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द सबके लिए ये रिक्वायर्ड है, दैट इज टू बी डन बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ, नॉट बाय द एम्प्लॉय। देन skill development levy. Skill development levy is also applies in the Singapore for the regardless of the nationality. Skill development जो इसका एक I think I just what is the percentage? I am not recognize the what is the percentage as of now, but there is a particular percentage of the skill development levy for the Singapore, and that then there is the tax clearance certificate. If someone is going to let the Singapore from after doing their employment in the Singapore, then we have to take the tax clearance certificate, which is in the form of IR21.
Then if we go for a India Singapore employment work, so how is Singapore is easy, and how Indian workings are complexity, and what are the complexities in the just like labor law complexity, multiple overlapping laws in India, but there is a streamlined process and unified laws in the Singapore. फॉरेन टैलेंट को हायर करना, इंडिया में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स है, बट सिंगापुर में स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में दे कैन हायर द फॉरेन टैलेंट्स. पेरोल टैक्सेशन, ESI एंड ग्रेचुटी, बट देयर इज ओनली द CPF, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड फॉर लोकल्स. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लोकल कोर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रिब्यूनल अपील एंड मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, दे आर वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन पावर, सो दे डू their dispute, they are working as a dispute resolution tribunal as well. Then ease of filing and exit, simple and contractual in Singapore, but often litigious in India. So then what are the bilateral treaties and trade agreements between India and Singapore? So the strategic ties between the India and Singapore are reinforced by the robust bilateral treaties, tax agreements, and free trade deals. So ये एशियन जो हो रखा है उसमें हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे बायलैटरल ट्रीटीज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, जो कि एक बिजनेस को सिंप्लीफाइड मैनर में सिंगापुर में सेटअप करने के लिए प्रोवाइड अपना एक ग्लोबल फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, there is Indian Singapore SECA as well, who is the comprehensive economic cooperation agreement. Indian Singapore SECA is also there. So there are duty free access of more than 8,000 products between India and Singapore. Service sector liberalizations, because in the banking system, telecom sector, IT and education sectors में liberalization policies हैं और जो कि SECA में signed हुई है. Then प्रोफेशनल मोबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उसमें 127 ऑक्यूपेशंस जो कि वहां पर मेजरली चलते हैं, उसमें इंडियन प्रोफेशनल्स को फास्टर इमिग्रेशन अवेलेबल है. देन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, गारंटीज एंड सेफगार्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स. सो दीज आर द बेनिफिट्स which is available for the covered under the Indian Singapore SECA. Then जैसा ऑलरेडी बताया था, इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो DTAA हो रखा है उसमें डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट पे 15% है, रॉयल्टीज पे 10% है, कैपिटल गेन्स वेरी करता है एज पर इंडियन टैक्स रूल्स. सो दीज आर द इंडियन सिंगापुर डबल टैक्सेशन ऑर्डिनेंट एग्रीमेंट एज वेल. Then there is also Asian India Free Trade Agreement and Bilateral Investment Treaty, जो कि टैरिफ्स एंड उस पे वर्किंग करती है. एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, AIFTA जिसको बोलते हैं, एंड इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन की 40% वैल्यू एडिशन. आज हम लोग इंडिया से मतलब लेट सपोज हमने कोई गुड्स परचेज किया सिंगापुर से, उसको इंडिया में लाके एंड फर्दर एक्सपोर्ट कर दिए, एंड there is a value addition is less than 70% or 30% or 50%. So if we are selling some goods goods in the Singapore and we are not going for a value addition less than 40%, then that would be considered as a Indian origin goods, because rules of origin is playing the most important role for the deciding in the tariffs plan for all the countries. So as per the rules of agreement, rules of origin, in AIFTA, there should be minimum 40% value addition in that particular product. That is why then only that is the change of the rules of origin. Just like if we are selling selling the product from India to Singapore, and we are further exporting from Singapore to third country, so Singapore must have to add 40% minimum value addition in that product. If we are selling the raw material from India to Singapore and then Singapore is making the finished goods, so raw material से finished goods बनने में 100% value addition हो रहा है. और either if we are the Singapore if wish to sell the raw material in different form, so it must have to add the 40% value addition in that price, so that the rule according to the rules of origin, then that would be treated as the Singapore origin goods.
So these are the AIFTA guidelines. And apart from that, there is bilateral investment treaty as well available in the signed in 2005 and terminated. This is already terminated in early 2017 and replaced by the SECA. Taxation and transfer pricing consideration already discussed हो ही गया. Taxation कि ये जो startups के लिए क्या benefits है, partial tax exemption policies I have already covered in that. And this is also covered. And IPR and IPR registration and protection. Singapore is also considered as a top 10 globally for the protection and innovation of the in the field of intellectual property registration and protections. And what kind of IP and registration process? What is the process? So trademark available, patent is also available, design, copyright, trade secrets. So these are the different kind of IPs which we can register. And what is the registration process? Check. We can go for the IPOS portal and IPOS Go app, and or either with the website we can apply for that. And application fees is 100 and vary between the 240 Singapore dollar to 340. And subject to examination and publication. If there is a position, we have to go for a same process in, just like in India, and the registration is valid for the 10 years subject to renewals. So, and apart from that, there is the funding, banking and currency regulations, because global financial hub, Singapore is known as the global financial hub for the Southern Asia market. So there are lots of banking and financial operations and currency regulations are also also there to protect the interest of the stakeholders. So as a part of conclusions, how we can say that what are the key takeaways for all the today's session is that Singapore is the business friendly, has the business friendly environment, strategic gateway, which is going for the Southern Asian and gateway to the Southern and take entry into the Southern Asian market, providing you legal protection, tax efficiency, and global connectivities. So this is all about from my side. Thank you so much everyone for listening me carefully, and thank you so much Team FinTrack founder Neeraj ji, program coordinator Khushbu ji for providing me such a wonderful opportunity to interact with you all the things. If you have any kind of questions, let me. I am here, and if you wish to connect me more, I can share my contact number in the chat box so that we can discuss further. Thank you, Lekhaji. Any participant have any question, please feel free to ask. They can also send us a query on mail or directly to Lekhaji's number also. He has shared his mobile number on the chat box. We are also sharing our email ID. In case if you have any query later on also, you can send it to us. And please feel free to ask right now any questions. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Please feel free to ask the question. Yeah, लेखक जी राकेश here. Yes, sir. लेखक एक चीज बताओ कि nowadays पूरा जो फोकस है फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर Yes, दैट sir. इज गोइंग टू शिफ्ट इन दुबई, करेक्ट? आपने पहला जो पीपीटी शुरू किया था, देन यू टोल्ड अस कि दुबई से बेटर जो है वो सिंगापुर है, करेक्ट? Yes, sir. बट आज की तारीख में जो इंडस्ट्री में ये एक तरह का, आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली, आई डोंट नो मच अबाउट द दुबई एंड सिंगापुर बोथ with regard to entrepreneurship and all such kind of means norms and compliances, पर फिर भी जो इंडस्ट्री का फोकस दुबई पर क्यों ज्यादा है बजाय सिंगापुर के?
ऐसा मतलब क्या मेजर difference है? Actually, I have spoken to my friends and all these things. They still believe that Dubai is better than southern uh, Asia countries. Why it is so? Sir, as far as our concern and as far as my knowledge, there is I prefer more strategically opportunities for the Singapore because as जैसा मैंने आपको बताया startups and उनके entrepreneurs के लिए अभी दुबई में कुछ भी ऐसा नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है वहां पर भी. वैट ऑलरेडी देर इज 5% एंड मूव ऑन जो भी वैट्स की रेट्स है वो वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है. तो वैट इज ऑलरेडी देयर. सो as there are as compare we if we compare both the markets, so Singapore is more strategically as agar UAE mein we have to work and if we particularly go for a Dubai, so tax startups and entrepreneurs के लिए अभी तक वहां पर कुछ नहीं है. दो दे आर वर्किंग फॉर द AI आर्टिफिशियल वर्किंग और बहुत ह्यूज डेवलपमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो कि ऑलरेडी सिंगापुर में हो चुका है. So that is why I prefer Singapore over Dubai. That is the basic reason. And apart from that, basically Dubai is location wise they have the benefit because वहां से यूरोप का सेंट्रलाइज्ड है. एशिया में अपने इंडिया से नियर बाय एरिया है. तो जोग्राफिकल रीच जो है वो थोड़ा सा दुबई का यूरोप एंड अफ्रीका से कंसर्न है. तो वहां पर दैट इज वाई द बिजनेसमैन प्रेफर दुबई बिकॉज सिंगापुर से कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पर है बट इधर ऑस्ट्रेलिया चाइना एंड ऑल द इधर इस रीजन में होने की क्यों बिकॉज जोग्राफिकल रीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अभी दोनों कंडीशंस में. बाकी टैक्सेशन बेनिफिट्स दोनों कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम है. लाइफ स्टाइल कॉस्ट दोनों कंट्रीज में सेम है. एंड उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल द थिंग्स मतलब इंडस्ट्री वाइज अगर आप जाना चाहें तो इंडस्ट्री वाइज दोनों ही जैसे टूरिज्म सेक्टर है मैंने बताया था फिनटेक पोर्टल. अब फाइनेंशियल सेक्टर में सिंगापुर इज मोर मतलब कंसिडर एज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू दुबई. वो फाइनेंशियल हब बना हुआ है तो इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बोथ द कंट्रीज में है. तो ऐसा वो नहीं है बट जो कनेक्टिविटीज एंड बेसिकली स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को जो अपॉर्चुनिटी सिंगापुर दे रहा है वो अभी तक कहीं भी वर्ल्ड में नहीं मिल रही है. दैट इज व्हाई वी प्रेफर सिंगापुर ओवर दुबई. Okay, thank you for your insight. थैंक यू सर. थैंक यू. Any other questions? Lekhaji, from all of us at FinTech Advisors, we would like to present this token of appreciation. Thank you so much, sir. We hope that this session was enlightening for all the participants. It was certainly very enlightening for me personally. And we hope that in the near future also, we will have the opportunity to get another session from you, sir, Lekhaji. Thank you, sir. Thank you so much, sir. As as a part of Interact, we are working in the different markets, so we can all we are available all the times. So thank you so much for the opportunity and thank you so much all the team and all the dignitaries